Hello and good morning everyone. In this video you are going to know the journey of a UPSC aspirant. You are witnessing it daily. You will be getting to know what I read in day-to-day basis and how I'm completing my daily targets and what are the hurdles I'm facing throughout the journey and throughout the topics also. So you can also relate with your journey. So I'm back after 2 days, uh, and then I studied remainder theorem and LCM and HCF of CSAT subject. CSAT is the subject in which we almost all of us face difficulty. So it is better to sort it out in the start of your prelims preparation, because as and when you will move forward, then you will be getting pressure of completing GS or completing CSAT. This way CSAT will be ignored always as always, and you will be fearing that you should attempt this year or not. So the recent trend of CSAT papers has been of the moderate to difficult level. While I was solving the question of remainder theorem and HCF, these sounds very simple topics, but in reality, if you'll see the question of last 2 to 3 years, then you'll not find it solvable anymore, that too directly in the examination. So you should be having enough practice of these sets like I did. So I'm preparing my CSAT with Ram Mohan Pandey sir, who is currently teaching in Sarthi IS as well. So it took me 2 to 3 hours to complete 3 hours to complete his lecture of remainder theorem, and then I did revise it and I did practices. Similarly, I did for HCF. So questions are solvable when you read them properly. So in remainder theorem, I have read, if a big number is given like 9 to the power 98, which is divided by 8, to how to expand this expression and get a remainder. So this is what we do in a remainder theorem, and the number can be of any form. The questions you will be getting from this topic will be like 17 to the power 99 divided by 4, 2 to the power 200 divided by 17, and 2 to the power 96 divided by 17, 2 to the power 101 divided by 17, and 10 to the power 10 divided by 7. So earlier we used to leave such questions. Now we are able to know how to factorize them and how to get the remainder out of them. And there is also one theorem and one shortcut. For example, there is a expression that is 4 to the power any power, and it will be divided by 6. Then remainder will always be 4. So if you see the question like that, then it should click in your mind that how to solve this question in a very short way. And there is also one Wilson's theorem. For example, there is a prime number. Suppose let us say it is 5 or maybe 53, and in the numerator it is n minus 1, that is 52 factorial. If the denominator is a prime number, that is 53, and numerator is a factorial 52, then what will be the remainder? It will be n minus 1, that is 52 only. If I'll write 4 factorial divided by 5, then what will be the remainder? Then 4 will be the remainder. Also there will be questions like big expressions like 12 to the power 73, 20 to the power 73, 26 to the power 73, and so on. So if the power is same, like 12 to the power 73, 20 to the power 73, if power is same, then we have to add the digits. For example, if 12 to the power 73 and 20 to the power 73, then we'll have to add 20 and 12, and then divided by the denominator.
and whatever will the answer will come, that will be applicable to the whole expression. So you have to add all the digits if power is same, and then divided by the denominator. And similarly, there will be questions whose power is not the same, but their sets will be there will be a set pattern. Then you'll have to find the pattern and then divide it by the denominator and then add the remainders. It may also be of the form like a big multiplication of two numbers, numbers of 2 digits, a big multiplication divided by a big number, and then they'll be asking you the remainder. So you have to be well versed with these topics. In the HCF also, we have read the shortcut. So we have read the shortcut like HCF of two numbers will be the least power of common terms. So if two numbers are given to you like 12 and 6, then you'll have to factorize 12 and you'll have to factorize 6. Then you will have to find the common terms between both, and then their least power का multiplication होगा आपका HCF. and LCM ऑल द टर्म्स होनी चाहिए इसमें, ज़रूरी नहीं कि सारे कॉमन ही हो, सारे टर्म्स आने चाहिए एंड देन उनकी हाईएस्ट पावर आनी चाहिए इफ़ दे आर कॉमन. So this way we'll be calculating LCM. In LCM and HCF questions, you will be getting questions like a bell rings. There are 3 different bells, and at this time they rang together, and one is repeating after 2 seconds, other is repeating after 6 seconds, and third is ringing after the interval of 8 seconds. Then how will we find what is the common time for the next time when they'll rang together? So we'll have to find the LCM of such the numbers and then proceed. So in this topic the questions were like there is a square floor and there is a tile of a particular size which is rectangular. Then you'll have to find the least number of tiles without cutting the tiles that will be able to fit the square area of the floor. And the other question will be like there is a square tile, so you'll have to find the least number of square tile, and the area of the floor, the sides of the floor will be given to you, and then you'll have to find the least number of square tiles, and square tiles should be the smallest. Also there will be questions like there are 3 big drums which contain this liter of oil or water or something else. So you'll have to find the biggest measure that can measure all the different quantities exactly. But in these questions you'll be getting a difficulty of the thing like how to solve this by using HCF or LCM. Then how will you going to be solve this, how will you solve this problem? So there is a shortcut, like you have to simplify the question in the shortest way. लाइक द बेल रिंग्स वाला क्वेश्चन था, तो हमें खुद क्वेश्चन को खुद ही सिंप्लीफाई कर देना है, खुद ही एक पैटर्न वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि डिजिट्स को हमें खुद ही लिखना है कि फर्स्ट बेल रैंग एट दिस टाइम, सेकेंड बेल रैंग दिस टाइम, एंड देन व्हाट आर द कॉमन बिटवीन देम, what is the term which is getting common, we are getting common, and that term we will be getting it by getting it through LCM or HCF. Then that is the solution of your problem. You'll be able to know that in this question you have to find LCM or HCF. And also if you will be solving lots of questions, then you will be able to know that in this question we do such thing if the question gets you in the exam that is similar to the one you have previously solved. Also there is one more pattern, that is if fractions of LCM and HCF.
For example, if you have to find the LCM of fraction, then you'll have to divide LCM of numerator and HCF of denominator. And if you have asked to divide LCM of numerator and HCF of denominator. And if you have asked about HCF of a fraction, then you'll divide HCF of numerator to LCM of denominator. So things will be reversed here. So I'm discussing here so I have discussed here my few of the insights here, but there were many more insights which I have found. And similarly, if you will practice these questions, you'll be also knowing it very well. Without doing it, if you think that you can go to YouTube and read some units and go to the CSAT, then it is not going to happen. This is the experience of my previous attempts. I was able to I was able to reach near GS cutoff, but I never reached CSAT cutoff. And this year I am taking CSAT seriously as a new subject. I'll practice its test papers as well, and I'll go confidently to the exam. Because fear of CSAT that mounts on the end of the months, that hampers your GS preparation as well. You cannot focus to your GS. You read GS and you think about the CSAT. When you study CSAT, then you fear about the exam and your GS also gets hampered. So don't do this mistake as I did in my previous attempts. Also, will be disciplined by I'll keep posting my daily targets here as well. Also, I was lost for 2 to 3 days because my previous exam, which I didn't study that well, I could have crossed that exam by very easy manner, but I made it difficult for myself. Now my whole journey of giving government exams has been extended for I don't know how many years. So I could have cracked that exam very easily, but I did a mistake again. So we are not going to repeat that, because at the end of the day, if everything will be fine, so I can be out of that guilt that I didn't do well in that exam. So as we discussed, we'll follow one quote of our scriptures, and then I'll sum it up, and I'll meet you the next day with my targets. So I have joined a course in which my mentor sends me at morning 6:30 a.m. and 10:30 p.m. Quote from the scriptures. For example, like today's shloka was yato yato निश्चरति, एंड ये बहुत ही ज़्यादा संस्कृत में है, जो कि भगवद गीता का कोट है. दैट इज़ वर्स 6.26. आप जाके देख भी सकते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेंटेंस है और संस्कृत में है, दैट आई कैन नॉट रीड, और मैं उसको गलत भी नहीं पढ़ना चाहती, बट इसका मैं मतलब बता देती हूँ. दैट मीन्स मन जहाँ जहाँ भटके वहाँ से उसे शांति से वापस लाना ही साधना है. मन का भटकना समस्या नहीं है, वापस लाना समस्या है. राइट, मन भटक जाता है पर हम उसको वापस नहीं ला पाते हैं ना, तो फोकस में हमें यही करना होता है. इसमें ये हमें साइंस एंगल भी बताते हैं. दैट न्यूरो साइंस इसे कहती है अटेंशनल रिकवरी. फॉर एग्जांपल, फोकस का टूटना नॉर्मल है, पर बार बार वापस लाने से क्या होता है. फोकस का टूट जाना इज़ नॉट अ बिग डील, बट क्या हम वापस उसको तुरंत हम फोकस कर पाते हैं. वी हैव टू फिगर इट आउट कि यार हमारा अभी फोकस टूटा है और हमें उसको तुरंत ही ठीक कर देना है. हमें और ज़्यादा गिल्ट में नहीं पड़ते जाना, उस साइकिल से हमें तुरंत बाहर आना है. तो अगर हम ऐसा बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो उससे ये होता है कि प्री फ्रंटल, ऐसा सब इसमें लिखा हुआ है, राइट. इन पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. दैट हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का, वो मजबूत होगा.
एंड इसमें ये भी लिखा हुआ है, जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन से लड़ता है वो थकता है, और जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्शन के बाद लौट कर आता है वह टिकता है। एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें टिके रहना है इस एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में क्या, हमें डेली टिके रहना, हर घंटे टिके रहना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे अभी के डेज डिसाइड करने वाले हैं, राइट। तो डिसिप्लिन का माप यह नहीं है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा हिंदी में लिखते हैं। सो डिसिप्लिन का माप यह नहीं कि मन कितनी बार भटका, बल्कि ये है कि आप कितनी बार वापस आए। आज का फोकस ध्यान को पकड़ना नहीं है। सो ये प्रैक्टिस ना, मैं आपको पहले, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस मैं पिछले 1 तारीख से कर रही हूँ, 2026 से मैंने एक से ही ये कोर्स ज्वाइन किया था। और बहुत सारे ड्रास्टिक नहीं बट बहुत सारे चेंज आ रहे हैं जो कि बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। कभी मैंने रिदम को ब्रेक किया, लेकिन ये मैसेज देख के मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे वापस आना है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे हेल्प कर रही है मेरी जर्नी में। तो आज का फोकस ये है कि हमें ध्यान को पकड़ना नहीं है, आज ध्यान से लौटना सीखना है। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। सो आज की हमारा जो रूटीन होगा उसका स्ट्रक्चर सेम होगा कि अच्छा, जो मैं पिछले दिनों में फॉलो कर रही हूँ ना, उसका ये स्ट्रक्चर है। लाइक मुझे सोना था 10:30, दैट आई गो टू बेड एट 10:30 एंड आई स्लेप्ट एट 11 लास्ट नाइट एंड आई वोक अप एट 6:30, नहीं आज 7 हो गया था, बट या दैट इज़ वे बेटर देन प्रीवियस ईयर। सो आज कोई नया नियम नहीं, हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, हमें उसी रूटीन पे। इनका ये कहना है कि अगर हम फिक्स्ड रूटीन फॉलो करेंगे तो हमारे फिक्स्ड रिजल्ट आने तय है। अगर हमारा सबसे पहले इन्होंने हमारा सोना ठीक किया कि हमें टाइम पे सो जाना है, सबसे पहला काम ये था। एंड देन फिर सुबह उठना सही किया, एंड देन फिक्स्ड स्लॉट्स पे हमारा बैठना डिसाइड किया कि बहुत सारे बच्चे इनसे कनेक्टेड है, तो हमारा फिक्स टाइम पे बैठना इन्होंने किया कि इस टाइम पे हमें ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं और ऐसे ऐसे हमें स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है, और वो स्लॉट्स आपके अनब्रेकेबल होने चाहिए, और ये रूटीन सिंपल भी होना चाहिए ताकि आप डेली फॉलो कर सकें और बर्नआउट भी नहीं होना है। तो इसमें इन्होंने आगे बोला है कि आज कोई नया नियम नहीं, वही रूटीन, वही समय, वही सरलता। आज का अभ्यास ये है कि दिन में जब भी ध्यान टूटे खुद को दोष मत दीजिए, बस ये कहिए कि वापस उसी काम पर लौट आइए। खुद को ये बोलना है। और हमें डायरी लिखने के लिए भी बोला जाता है, जैसे कि हमारे शिवन सर के भी इनिशिएटिव में था कि डेली हमें अपने आप को ट्रैक करने के लिए, खुद को मेज़र करने के लिए हमें डायरी लिखनी होती है। तो रात में जो डायरी लिखनी है 5 मिनट में कि आज मैं कितनी बार ध्यान से भटका और कितनी बार वापस आया। मन को बांधना साधना नहीं है, मन को लौटाना साधना है। आज बस लौटते रहिए, यहीं से स्थिरता गहरी होती। दैट इज वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। सो माई टारगेट्स ऑफ द डे आर दे इज़ कि मुझे अभी 2 रीजनिंग के लेक्चर्स देखने हैं, मैं कल बता दूंगी, और फिर मुझे पिछला रिवीजन करना है सबसे पहले, एंड देन एक नंबर सिस्टम का भी मुझे लेक्चर देखना है। तो हमारा ये टारगेट है कि इस महीने में हम अपना CSAT ख़त्म कर देंगे। एंड माइंड यू, CSAT में सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, लेक्चर देख रही हूँ, लेक्चर में ही जितने क्वेश्चन हैं उन्हीं को प्रैक्टिस कर रही हूँ, उन्हीं को ही रिविज़न कर रही हूँ, ताकि पहले मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। एंड देन अब मुझे देखना है कि क्या मैं, जब ये हमारा 31 को टारगेट ख़त्म हो जाएगा CSAT का, तो मुझे ये देखना है कि क्या मैं इन टारगेट्स को, जो भी मैंने अभी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए हैं, मैं इनको रियल क्वेश्चंस में रियल टाइम में अप्लाई कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर होगा, डायरेक्ट अभी पढ़ के जाने से भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। अभी तो हम इसको पढ़ेंगे जो हमें पढ़ाया जा रहा है क्लास में, और उसको ही रिवाइज़ करेंगे। देन उसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही कि नहीं हो रही है या नहीं, और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन फिर उसके बाद हमें कंबाइंड टेस्ट देना होगा। अभी तो हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस क्वेश्चन को हमें 2 मिनट में ही सॉल्व करना है, पर एग्ज़ाम में तो ये टाइमिंग हमें फिक्स रखनी ही पड़ेगी। फिर हमें टेस्ट देना पड़ेगा कि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इवन UPSC में अब हाइब्रिड क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि इंटरमिक्सिंग चल रही है ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, लाइक HCM LCF में, LCM HCF में ये लोग, हो सकता है कि कोई और भी टॉपिक, कैलेंडर क्लॉक का टॉपिक मिक्स कर दे, हु नोज़। और ऐसा ये करते भी आए हैं। तो हमें
उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें टेस्ट से ही पता चलेगा। एंड ओवरऑल हमें कट ऑफ ही क्लियर करना है, बट कट ऑफ का हम जब भी टारगेट रखते हैं कि हमारा तो कट ऑफ 67 है, तो हम 45-50 तक ही रह जाते हैं। नाउ दिस ईयर वी आर गोइंग टू टारगेट अबव 100 at least, so that we are able to qualify our 67 target very easily. So all the best to you all for your day.